Hello guys, welcome back to the channel. So today I will be showing you how I painted my wall. I hope you enjoy. फैन का आवाज़ आएगा ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, मेरे से फिर मुझसे हिल नहीं हो रही है। सो मैंने थोड़े बहुत ऐसे आउटलाइंस बना लिए हैं। आई यूज्ड अ चॉक फॉर दिस एंड बालों को थोड़ा सा तेल कर लिया था, बॉडी में वैसलीन लगा लिया जस्ट बिकॉज वो पेंट तो लग नहीं जाए, तो मम्मी धुलाई करेगी। और डंगरी पहनी है मैंने, पता नहीं क्यों डंगरी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बनी पेंटिंग के लिए। ऑल्सो आई एम नॉट यूजिंग द पेंटिंग वाला कलर जो दीवार पर लगाते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक पेंट, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, है ना। अपन हमेशा जुगाड़ करते हैं, हम अभी भी जुगाड़ ही कर रहे हैं, ओके। बट चलो लेट्स होप कि अच्छे से सब हो जाए, डांट थोड़ी कम पड़े, बिकॉज मैंने बताया नहीं घर पे कि मैं पेंट कर रही हूँ। लेट्स सी, अच्छा हो भी सकता है अच्छा हो भी सकता है। घर में चालू કર્યું ના એકદમ ફેલ થયું, પછી મને હટાઈસ કેવી રીતે? પાણી નાખીને એ હટી જશે? હા, ફેબ્રિક પેઇન્ટ છે, ખજડાય ના જાય। એમાં લખેલું છે 72 અવર્સ ની અંદર કરે તો, પણ that is not fabric ના, વોલ પર થાય, વોલ પર તો નીકળી જાય। એ થાય છે તો આઈ થિંક થોડું ઠીક રાખવું જોઈએ, બાકી થાય છે તો ખરી। द एग्जैक्ट रीज़न फैब्रिक पेंट यूज़ करने का? इसलिए क्योंकि मेरे पास 3 साल पहले मैंने वो खरीदा था और मैंने बॉक्स आज खोला है। जो एक ना पूरे बॉक्स पड़ी थी, जो ये मस्त है, जो तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम से टाइम इन द सेंस लाइक द ईयर। पैक्ड नवंबर 2016 लिखे सबसे लास्ट में लख्યું છે। नाइस, 2016 का सामान है। हाँ तो मैं वेस्ट नहीं करवाનું, बरोबर? माરા પપ્પાની મહેનતની કમાઈ હતી। આ વોલ પણ પપ્પાની મહેનતની કમાઈ છે। એ છે, બટ ઇટ વાઝ લાઈક કે वो यहाँ હતી નહીં તો મારા કલર્સ યુઝ નહીં થયા। અગર वो ઘરે હોતી તો आई वुड हैव यूज्ड इट, बरोबर? अच्छा, जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दो।